Today, in the subject of the quality management, ये खजा है वो अभी 2 बिल्डिंग का we will discuss about the Unit 4. In the case of the Unit 4, the syllabus is the statistical process control and the TQM tools. Sir, good afternoon. Afternoon. 7 quality control tools, even management tools, benchmarking, quality function deployment, total preventive maintenance, and failure mode effect analysis. This is the syllabus of the Unit 4, and we will discuss about the 7 quality control tools which will change any of the institution, any of the organization dramatically for improving the quality. These are the 7 quality tools which you can apply in your industry to change the quality parameters of the industry. The 7 tools are the check sheet, histogram, Pareto analysis, fishbone diagram, scatter diagram, flow charts, and the control charts. These are the 7 tools, quality control tools, and by using these tools, any industry and the organization can be improved dramatically in the case of the quality. Dr. Korowo Ishikawa, who was the Japanese professor, was first total quality management guru who has been associated with the development and advocacy of the using the 7 quality control tools in the organization for the problem solving and the process improvement. 7 old quality tools are a set of the quality tools that can be used for improving the performance of the production process. Any production process can be improved in the case of the performance, from the step of producing a product or services to the last stage of the production. This can be used. So the general purpose of this paper was to introduce these 7 quality control tools. This study found that these tools have the significant roles to the monitor, obtain, analyze data for detecting and solving the problems of the production process. Every production process of the industry can be improved and monitored, analyzed with the help of these 7 quality control tools in order to facilitate the achievement of the performance excellence in the organization. If you want to get the performance excellence, if you want to achieve the performance excellence, then you must to apply these 7 quality control tools. There are 7 basic quality tools which can assist an organization for problem solving and the process improvement. The first group who proposed 7 quality basic tools was the Dr. Koru Ishikawa in 1968 by publishing a book entitled Gemba no Kyu Sundo that was concerned managing quality through the techniques and practice of the Japanese firm. Dr. Koru Ishikawa mainly worked in the Japan and changed every company of the Japan and revolutionized the Japan in case of the quality. It was intended to be applied for the self-study, training and employee by foremen or quality control leading groups in the Japan. Japan is so developed with the help of the Dr. Koru Ishikawa. It is in this book that the 7 basic quality control tools were first proposed. Valuable resources when applying the 7 basic tools. These 7 basic quality control tools which introduced by the Dr. Ishikawa are: number 1, check sheets. Number 2, graph, trend analysis. You make a trend analysis of the company where the trend is going on. Trend is increasing, trend is decreasing, or trend is remaining constant. You make a trend analysis of the graph of the every component which want to you study. Then the histograms, Pareto charts, cause and effect diagrams, scatter diagram. Cause and effect diagram is the
Fishbone diagram, also known as the fishbone diagram, is the most efficient tool for improving the performance excellence in organization. Then the scatter diagram, then the control chart. Figure 1 indicates the relationship among the 7 tools. These are the identification, these are the analysis, cause and effect analysis, trend analysis, data tables, Pareto analysis, histogram, scatter diagram, and control chart. These are the 7 quality control tools. Here the relationship is given. Here histograms you can make with the help of the data. Scatter diagram made with the help of the analysis. You can do the analysis by the control chart, scatter diagram, histogram, and predict the behavior of the everything. Predict the behavior of the economy, national economy, predict the behavior of the state economy, predict the behavior of the organization economy, and any process with the help of these analysis which have been given here. And with the help of the cause and effect analysis, you can improve any organization with detail. Check sheet. Check sheet are simple forms with certain formats that can be aid the user to record data in form systematically. Data are collected and tabulated on the check sheet to record the frequency of the specific events during a data collection period. They prepare a consistent, effective, and economical approach that can be applied in the auditing of the quality assurance for reviewing and allowed to step in a particular process. Check sheet and also help the user to arrange the data for the utilization later. The main advantage of the check sheets are to be very easily to apply and understand, and it can make a clear picture of the situation and condition of the organization. Check sheet can make clear picture of the situation. What is the situation is happening in the company? What is the situation is happening in the organization? A director of any of the organization can check by the check sheet. Condition of the organization. They are efficient and powerful tools to identify the frequency problem, but they don't have effective ability to analyze the quality problem into the workplace. The check sheets are in several. 3 major types are such as a defect location check sheet, tally check sheets, and defect cause check sheets. These are the 3 major types of the check sheets are there. Defect location check sheet will check where the defect is going on. It will locate the situation where the defect is going on in your company and improve the situation of the quality there. Tally check sheets and defect cause check sheets, and a tally cause check sheets are for the telephone interruption, or here is given here. Check sheet that can be used for collecting data during the production. Telephone interruption, region, this is given here. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Friday. Wrong number, information request, boss number, and the total. This is the telephone interruption check sheet for the tally. Hence, similar, this is given an example. Similarly, you can make the tally sheet for the every organization, and every process of the production process, and improve the production process dramatically. And this is already achieved in Japan. In Japan, this is achieved by the Ishikawa. Histogram is a very useful tool to describe a sense of the frequency distribution of the observed value of the variable. These are the observed value of the variables which are given here in the histogram. Manufacturing process failure. Why the manufacturing process failure is taken in the company? Frequency is given in the y-axis, and the manufacturing process failures is given in the x-axis. You can check by the histogram. Histogram is the very useful tool to describe a sense of the frequency of disruption of the observed value of the variable. It is a type of the bar chart that visualizes both attribute and variable data
of a product or process. Also assist user to show the distribution of the data and the amount of the variation within a process. It displays the different measures of the central tendency, mean, mode, and average. It should be designed properly for those working into the operation process can easily utilize and understand them. Also, a histogram can be applied to investigate and identify the underlying distribution of the varying variable being explored. Figure exploits a histogram of the frequency of defects in the manufacturing process. Here is the manufacturing process. Run-up test, system integration, motor static test, motor integration. Here why the failures have been taking place, it has been depicted. Similarly, another problems from the industry can be depicted in a histogram. This is the major tool to recover the quality in case of the industry. Next one is the Pareto analysis. Pareto analysis. The Pareto analysis have been shown here in the figure. This is the Pareto analysis shown here in the figure. This is the Pareto chart. Pareto chart is introduced by Italian economist Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto have introduced the Pareto chart, who worked with the income and other unequal distribution in the 19th century. He noticed that 80% of the wealth was owned by only 20% of the population. ये बहुत ही जबरदस्त कंक्लूजन है विल्फ्रेड प्रेटो का, जो प्रेटो साहब कहते हैं कि जो 80% जो वेल्थ है वो 20% के पास ही वर्ल्ड में अवेलेबल है, वही 20% पीपल वर्ल्ड को चलाते हैं. यही आपका पेरेटो प्रिंसिपल है. और ये कहना है विल्फ्रेड प्रेटो का कि इंडस्ट्री में भी ओनली 20% काउज ही हैं जो कि 80% फेलोअर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ये 80-20 रूल इसको भी बोलते हैं शॉर्ट में, 80-20 रूल है ना. तो लेटर पेरेटो प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड बाय जुरान इन द 1950. A Pareto chart is a special type of the histogram that can easily be applied to find and prioritize the quality problem, conditions, or their causes in organization. On the other hand, it is a type of the bar chart. This is a type of the bar chart. Here is there. This is shown here. Type of the, this is the Pareto chart is there. Pareto chart is there. And the Pareto chart is made here. A Pareto chart is a special type of the histogram that can easily be applied to find and prioritize quality problems, conditions, or their causes in the organization. On the other hand, it is a type of the bar chart that shows the relative importance of the variable prioritized in the descending order from left to the right side of the chart. The aim of the Pareto chart is to figure out the different kind of the non-conformity from the data figure. Maintenance data, repair data, parts scrap data, and other data. Any data you can plot in the Pareto chart: maintenance data of your company, repair data of the company, parts scrap rates of the company, or other resources. Also, Pareto chart can generate a mean for investigating the concerning quality improvement and improving efficiency, material waste, energy conservation, safety issue, and the cost reduction. As figure 4 demonstrates concerning the Pareto chart, it can improve the production before after the changes. This is the stale, burned, underchalked, slashing, and other. You can see here, this is the problem, is the 20% of the problem which is responsible for the all the causes of the industry. There are the only 20% the problem which is responsible for the all causes of the problem. Next one is the fishbone diagram. Fishbone diagram
Kaoru Ishikawa is considered by the many researchers to be the founder and first promoter of the fishbone diagram, cause and effect diagram. This is the one of the best tool in industry to apply cause and effect diagram and the fishbone diagram to improve the quality situation in any of the industry or any of the organization. Or this is known as the root cause analysis and concept of the quality control circle. Concept of the quality control circle. Cause and effect diagram was developed by the Dr. Kaoru Ishikawa in 1943. It has also two other names that are Ishikawa diagram and the fishbone, because the shape of the diagram looks like a skeleton of a fish to identify quality problems based on the degree of the importance. This is the like a fish. Hence, this is known as the fishbone diagram. This is known as the cause and effect diagram. This tool remains very fruitful in terms of the solving the problem of an industry. It has also two other names that are known as the Ishikawa diagram and the fishbone, because the shape of the diagram look like a skeleton of the fish to identify the quality problems based on the degree of the importance. The cause and effect diagram is a problem solving tool that investigates and analyzes systematically all the potential for the real causes that result in a single effect. On the other hand, it is an efficient tool that equips the organization's management to explore for the possible causes of a problem. This diagram can provide the problem solving efforts by gathering and organizing the possible causes. What are the possible causes there? You can gather in your industry. You can make a project, you can make a research in the industry and gather the data. What are the possible causes of the failure of in the production process? Why the losses is going in the SME, Indian SME? Why the losses is going in the public sector? You can organize the data, you can gather the data and reaching a common understanding of the problem, exposing gaps in the existing knowledge, ranking of the most probable causes and studying each cause. आप जो है हर एक काउज को पता कीजिए कि भाई कंपनी क्यों लॉस में जा रही है, व्हाई द कंपनी इज गोइंग ऑन द लॉस, क्या कारण है, उसके जितने प्रोबेबल काउजेज हैं उसको रैंक कीजिए. इशिकावा जी कहते हैं कि भाई उसको काउजेज को पता कीजिए, आपका इंडस्ट्री जो है आपका जो है वो आपको सक्सेस हो जाएगा. एंड स्टडिंग द ईच काउज, सारे काउज को एक एक करके डाटा को ऑर्गेनाइज कीजिए, गैदर कीजिए और आपका इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो जाएगा. You can, an Indian industry can become a Japanese industry by adopting these 7 quality control tools in the each company. The generic category of the cause and effect diagram are usually 6 elements such as an environment. इशिकावा जी भी ये कह रहे हैं कि भाई जो cause and effect diagram है वो 6 elements है. उसमें किसी भी इंडस्ट्री में आप इस एलिमेंट्स का पता कीजिए और इसको आप इंप्रूव किए. ये 6 एलिमेंट हैं: इन्वायरमेंट, मटेरियल्स, मशीन्स, मेजरमेंट, मेन एंड मेथड. यही 6 एलिमेंट हैं जो किसी इंडस्ट्री का पिलर जिसको बोलते हैं, जहां से आपको काउज दिखता है और फेलोवर दिखता है. ये 6 चीजों को आप ठीक कीजिए, आपका इंडस्ट्री सक्सेस कर जाएगा. एंड इंडियन एसएमई विल बिकम ए जापानीज कंपनी. ये 6 चीजों को आप ध्यान से देखिए कि ये 6 चीजें आपका क्या क्या है. These are the potential causes can be indicated by the arrow entering the main cause arrow. ये आपको प्रॉब्लम है. मेन प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है, यहां के प्रॉब्लम को बताइए. पहले मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करिए कि इनकरेक्ट मटेरियल तो नहीं आ रहा है, आपका जो आइटम जो बन रहा है वो कहां फेलोर हो रहा है, मटेरियल डैमेज तो नहीं आ रहा है, आइटम खराब तो नहीं हो रहा है. मटेरियल को इनकमिंग मटेरियल को चेक कीजिए. इनकरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, मटेरियल डैमेज तो नहीं है, उसको मटेरियल को चेक कीजिए. दूसरा है मेथड को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है.
बहुत सारी कंपनियां हैं, यूनिलीवर है, कई प्रोडक्ट बनाती है, 150 प्रोडक्ट बनाती है, उसके सारे मेथड उसके स्टैंडर्डाइज्ड हैं, उसके मेथड जो है सारे स्टैंडर्डाइज है। मेथड को स्टैंडर्डाइज करने के बाद वो कंप्लीट ऑटोमेशन हो जाता है। एक आदमी को सुबह उठता है, उसको मालूम रहता है कि उसको क्या करना है, एक मशीन से कितना निकलेगा, ये सारे पता चल जाता है। आप एक ऑटोमेशन कर सकते हैं मेथड को स्टैंडर्डाइज करके। आप उसमें पता कीजिए कि रॉन्ग सीक्वेंस तो नहीं है, पुअर प्लानिंग तो नहीं है, मेथड का पुअर प्लानिंग तो नहीं है। आप इसको मेथड को देखिए, जो कंपनी में जो प्रोसेस है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या है, उसमें आपको उसको पुअर प्लानिंग तो नहीं है, आप इसको चेक करिए। तो मेथड को चेक करने के बाद आपका जो है जो आपका जो प्रोडक्ट है, आइटम है, बिल्कुल सही बनेगा और प्रोसेस आपको मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम में निकलेगा, कॉस्टिंग भी कम होगी और आपका जो प्रोसेस है वो आपको सबसे कम रेट में आपको प्रोडक्ट आइटम में बन जाएगा। दूसरा, मशीन आपका आउटडेटेड तो नहीं है, एक्सेसिव गियर वियर तो नहीं हो चुका है, रॉन्ग कटर तो नहीं लगा हुआ है, आपका जो मशीन है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है कि नहीं है, आपका मशीन में प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपका जो मशीन है वो आपको स्लो तो काम नहीं कर रहा, कैसे दूसरे कंपनी वाले कम रेट में दे रहे। इसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण आपका मशीन हो सकता है कि आपका जो मशीन का जो प्रोडक्शन है वो आपका स्लो है। तो आप उसका मशीन का प्रोडक्शन स्लो है, स्पीड किस तरह का स्पीड है, फास्ट है, उसको चेक कीजिए कि आपका वर्ल्ड लेवल का मशीन है कि नहीं है। हाउ द यूनिलीवर प्रोड्यूस द सेम आइटम एट द लोअर कॉस्ट। आप मशीन को चेक कीजिए कि मशीन की कैपेसिटी क्या है, मशीन का फेलोवर क्या है, मशीन को चेक कीजिए। चौथा है मेजरमेंट। आप मेजरमेंट कीजिए, आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन आपने लगाया है वो तो ठीक है, रॉन्ग स्पेसिफिकेशन तो नहीं है, ये इसको मेजर कीजिए। इसको मेजरमेंट कई क्वालिटी गुरु कहते हैं, सीज द इंस्पेक्शन, सीज द, वो एडवर्ड डेमिंग भी कहते हैं, इंस्पेक्शन को सीज कर दीजिए। आप जो सारे आइटम ठीक रखिए, इंस्पेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन को खत्म कर दीजिए। आइटम सही बनना चाहिए, चेक कर लीजिए, प्रोसेस चेक कर लीजिए, टूल लगा दीजिए, सीज द इंस्पेक्शन। मेजरमेंट जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, रीस्क्रैप नहीं होना चाहिए, रीवर्क नहीं होना चाहिए, किसी भी आइटम में रीवर्क नहीं होना चाहिए जो कि आपको लेबर कॉस्ट को बढ़ाता है। तो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट को चेक कीजिए। दूसरा, पर्सनल सबसे बड़ा अहम है किसी कंपनी का सक्सेस में। अकबर भी 9 रत्न रखते थे, ये 9 रत्न जो है आपको कंपनी में रखना जरूरी है। ये आपको पर्सनल, आपको जो है अच्छा पर्सनल रखना जरूरी है। अकबर 9 रत्न रखने के बाद ही वो एक सफल राजा हुए थे। तो पर्सनल जो आपको है वो आपको सही है कि नहीं है, ये आपको रखना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड इसलिए नामी है क्योंकि वहां पे नोबेल प्राइज प्रोफेसर बैठा हुआ है। तो पर्सनल का जो रैंकिंग है वो रैंकिंग आपको रखना जरूरी है कि भाई आपके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो किस लेवल के हैं वर्ल्ड में, उसको कुछ आता उता है कि नहीं है, नहीं है तो उसकी पुअर ट्रेनिंग है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, उसका एटीट्यूड को चेंज कीजिए, इंपेयर्ड विजन को उसको खत्म कीजिए। पर्सनल का जानना बहुत जरूरी है। यहीं पे आपको सारा मुद्दा अटक जाता है और यहीं पे आपको जो आपके जो इंडियन एसएमई का जो मेन काउज है आपको पर्सनल है, अनस्किल्ड लेबर है, यही मेन कारण है। जो इंडियन एसएमई में जो है डेली कॉन्ट्रैक्ट के लेबर रखते हैं, अनस्किल्ड लेबर रखते हैं, उससे उसका फेलोवर होता है। आप जो है लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, एटीट्यूड को ठीक कीजिए, विजन को क्लियर कीजिए, बिल्कुल आपका कंपनी जो है आपको घाटा से निकल करके फायदे में पहुंच जाएगा। पर्सनल आपका जरूरी है। और लास्ट आइटम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब है इर्गोनॉमिक्स।
लाइट तो ठीक है, वर्किंग इन्वायरमेंट पीपुल का अच्छा रहेगा तभी तो पीपुल काम करेगा। उसको उसको कई तरह का जो है टेम्परेचर वहां पे हाई रह रहा है, टेम्परेचर लो रह रहा है, वो कहां से काम करेगा वो? अगर लाइट सही रह रहा है कि नहीं रह रहा है, इन्वायरमेंट को चेक कीजिए कि आदमी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि नहीं है। तो इन्वायरमेंट चेक करना, ये 6 एलिमेंट्स जो है आपको फिशबोन डायग्राम को दिया हुआ है। ये किसी भी इंडस्ट्री को ये चेक करके जो है किसी भी इंडस्ट्री को चेंज कर सकता है। अगला है स्कैटर डायग्राम। दिस इज द फिगर ऑफ ए स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज ए पावरफुल टूल। सर इतना ही रहने दीजिए आज। अच्छा ठीक है, फिर जो है ठीक है, ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर जल्दी।